Welcome students. So today we are continuing with our question answer session from Father's Help. Okay, we are doing it from question bank. जिनके पास ये किताब नहीं भी है वो भी यहाँ पे वीडियो में देख के इसका प्रैक्टिस कर सकती हो. Okay, we are doing today from unit 2. We are doing the question answer from unit 2 today of the chapter Father's Help from your The Father's Help is from Bliss, and question answers we are practicing this from question bunch class 10. Okay, so now let us see begin. Choose the correct alternative. Swami expected to convince his father why he must avoid school for the day. The change of father's behavior was unexpected. Swami's father proposed to send a letter to the headmaster. Swami was unable to change father's decision. Father composed the letter to the headmaster by the time Swami got ready to leave. Um, Swami's father put the letter in an envelope and sealed it. Swami asked about the content of the letter with fear and anxiety. According to Swami's father, the letter contained plenty of things about Samuel. Now complete the sentences with information from the text. Swami expected that. अब स्वामी क्या एक्सपेक्ट किया था देखो यहीं पे आंसर मिल जाएगा. स्वामी एक्सपेक्टेड दैट he would be able to convince his father. He would be able to convince his father about why he must avoid the school for the day. Swami expected that he would be खुद से लिखो he would be able to convince his father why he must avoid school for the day. उसके बाद Swami's father decided to send a letter to the headmaster. By no amount of protest, Swami was able to change his father's decision. Swami's father decided to send a letter to the headmaster. By no amount of protest, Swami was able to change his father's decision. Swami's father jotted down a long letter when Swami was getting ready to leave for school. Swami wanted to know apprehensively what his father had written. Father instructed Swami to give the letter to their headmaster. Now true and false and supporting statement. Swami expected to convince his father successfully. Expected, yes. क्योंकि यहाँ पर देखो Swami hoped that his father would be able to see why he must avoid school for the day. तो ये उसका expectation था, इसलिए ये true होगा. Swami did not protest against his father's decision to send a letter to Samuel. अब ये फॉल्स है. एक तो लेटर उसके पापा सैमुअल को नहीं हेडमास्टर जी को दे रहे थे और स्वामी ने प्रोटेस्ट किया था. ठीक है, स्वामी ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि देखो यहाँ पर नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड. No amount of protest from Swami would make him change his mind. So ये इसका मतलब ये है कि हाँ स्वामी ने प्रोटेस्ट किया था. अच्छा यहाँ पर देखो एक सेंटेंस है बाय नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट स्वामी वॉज एबल टू, मैंने कहा था चेंज हिज फादर्स डिसीशन, या ये भी लिख सकती हो चेंज हिज फादर्स माइंड. जैसा हो तुमको इच्छा हो वैसा लिख सकते हो. अच्छा फादर्स बिहेवियर चेंज जस्ट एज ही हैड एक्सपेक्टेड, फॉल्स. ये वाला फॉल्स है क्योंकि देखो यहाँ पर फादर्स बिहेवियर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, तो ये वाला सपोर्टिंग स्टेटमेंट. बाय द टाइम स्वामी गॉट रेडी फादर कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू सैमुअल. अब ये फॉल्स है क्योंकि ये लेटर सैमुअल को नहीं जा रहा था. देखो यहाँ पर सपोर्टिंग स्टेटमेंट बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर. ठीक है,
Now this you see, Swami's father put the letter in a sealed envelope. ये true. He put it in an envelope and he put it in an envelope and sealed it. इसका मतलब sealed envelope. So ये true है. Father refused to tell Swami what he had written in the letter. ये भी true है, क्योंकि no ये true नहीं है, sorry ये false है. ये false है क्योंकि देखो यहाँ पर what have you written, father? Nothing for you. Give it to the. Have you written anything about our teacher Samuel? Yes, plenty of things. नहीं, इसका ना ये करो. Father refused to tell Swami what he had written in the letter. ये true है. Father refused to tell Swami what he had written in the letter. ये true है क्योंकि father ने बताया नहीं था, और बताया नहीं था इसीलिए स्वामी को मतलब जानने का उत्सुकता थी. उसको लगा कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया होगा सैमुअल जी के बारे में, उसको गिल्ट फीलिंग होने लगा. तो फादर रिफ्यूज टू टेल स्वामी व्हाट ही हैड रिटन इन द लेटर. ये ट्रू है. फादर रिफ्यूज टू टेल स्वामी व्हाट ही हैड रिटन इन द लेटर. ये ट्रू है. और सपोर्टिंग स्टेटमेंट ये लिखोगी, व्हाट हैव यू रिटन फादर. स्वामी आस्क्ड एप्रीहेंसिवली, नथिंग फॉर यू. ठीक है, उन्होंने बोला नहीं. नाउ क्वेश्चन आंसर. व्हाट डिड स्वामी होप. स्वामी क्या होप किया था, देखो यहाँ पे आओ. स्वामी होप दैट होप दैट ही वुड, यहाँ पे विथ दिस नहीं लिखोगी, ही वुड बी एबल टू मेक हिज फादर सी why he must avoid school for the day. Swami hoped that he would be able to make his father see. Swami hoped that he would be able to make his father see why he must avoid school for the day. Next, what change did he notice in his father's behavior? ही से आंसर नहीं शुरू करते हैं, कोई भी प्रोनाउन से आंसर नहीं शुरू करोगे. स्वामी noticed in his father's behavior an unexpected change. Swami noticed in his father's behavior an unexpected change. What did father propose? Father proposed to write a letter to the headmaster. यहाँ पे देखो, फादर यहाँ पे लिखोगी फादर proposed to send a letter with Swami to the headmaster. यही लिख दो. Father proposed to send a letter with Swami to the headmaster. Okay. What was father's instruction to Swami about the letter? Father का क्या instruction था स्वामी इसके बारे में? देखो यहाँ से शुरू करोगी. फादर इंस्ट्रक्टेड, इस तरह से शुरू करोगी. फादर इंस्ट्रक्टेड, ईडी लिखोगी. फादर इंस्ट्रक्टेड स्वामी टू गिव द लेटर टू देयर हेडमास्टर एंड देन गो टू हिज क्लास. To give the letter to the headmaster and then go to the class. पहले हेडमास्टर को चिट्ठी देना, फिर क्लास में जाना. फादर इंस्ट्रक्टेड स्वामी to first give the letter to their headmaster and then go to his class. Okay. Now next question देखते हैं क्या है. What was the unexpected turn in Swami's father's behavior? The unexpected turn in Swami's father's behavior was that he decided to send a letter to the headmaster through Swami. The unexpected turn in Swami's father's behavior was that he decided to send a letter to the headmaster through Swami. What did Swami's father do during the time Swami got ready for his school? यहाँ पर देखो. By the time Swami was ready to leave for school, father had composed a long letter to the headmaster. He put it in an envelope and sealed it. यहाँ तक लिख दोगे सब. What did Swami ask his father apprehensively and how did his father react? Swami asked his father apprehensively what he had written in the letter. Swami asked, यहाँ पे ed करोगी, asked यहाँ पे ed करोगी. Swami asked his father apprehensively what he had written in the letter, and his father refused to give him any information.
एंड हिज फादर रिफ्यूज टू गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। पैसेज 2 पार्ट 2 का यूनिट 2 का और भी जो सवालात हैं, यूनिट 2 का और भी जो सवालात हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, देखते रहो, लाइक करो वीडियोस को। मेरे सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है। दोस्तों के साथ शेयर करो, दूसरे स्कूल में है, सेम क्लास है, शेयर विद देम माय वीडियोस, आस्क देम टू सब्सक्राइब। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह के वीडियोस ग्रामर के ऊपर, बाकी सारे चैप्टर्स के ऊपर, क्वेश्चन आंसर्स जो भी मैं डिस्कस करूँगी सब मिलते रहेंगे तुम लोगों को। सो प्लीज़ इस वीडियो में दिखाए गए क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करो, घर में अपने कॉपी में करो, बुक है तो बुक में करो, और wait for my next video. Till then, goodbye students.